Welcome to Talk with Abhishek. And I'm sure you might be assuming where is Abhishek? Okay, I've replaced him because he can't be at two places at once. So today I'm going to take over his channel, and I'm interviewing a great person in this channel today. His name is Aditya, who's a founder and CEO of Fleek. We would like to know more about that, but today's video is dedicated to all the IITians and IIMs over there who are contributing a lot for Make in India. And of course, very intelligent person. I think he's the only one I met who has IIT and IIM. So would love to know more about Fleek. Aditya, welcome to the show. Thank you. I want to know how did you come up with the idea of Fleek, and what exactly is Fleek? Okay. I'll actually give you a little bit of an idea of what Fleek does. Fleek is a one-stop shop where you can purchase whatever subscription you want. In today's day and age, especially after pandemic hua, so there's a lot of subscriptions in OTT, music, publications, rentals also. There's a bunch of subscriptions for Lenko, Rento Mojo. So that's where our app helps you manage all these very seamlessly instead of forgetting when the next subscription is due, or you're watching a movie and then all of a sudden the subscription has ended. Instead, to sort of manage the whole clutter is where our app helps you. How I came across this idea was, it's actually a really funny story. So I met my co-founder for a beer, and we got really drunk actually that day. And then we were just we like to riff on ideas when we are a little drunk. So we started talking about this one pain point where I think this subscription called Athletic, which is a football magazine subscription, they billed me for some 6,000 rupees. And I was just ranting saying, hey, kya subscription hai? Like, they billed me for 6,000 rupees and all that. And then the next day morning, when sort of connected with him again, we realized that, there's a real pain point there, right? It's not just like a drunk rant which was happening. So that is when we thought, hey, let's dig a little more deeper. Let's see how big the market is. Is there, scope in sort of building $1 million or a $1 billion company in this? Quickly did a bunch of research. Over the next 2 weeks, we were at it like day and night, and then realized that in India, there's nobody doing this sort of a consumer prop. So we thought, yeah, why not build for this for ourselves first, and then for the end consumer. We recruited like a couple of designers and developers, and then started building for the app back in April last year. And since then, we've been sort of growing our team as well as bringing in more users. Currently, we have a little more than 750,000 users, and yeah, we're seeing some good growth. So, आपको हिंदी आती है? Yeah, of course. हिंदी में अच्छे से बोल लेते हो ना? ठीक है. तो मुझे ये जानना था कि आपको कभी डाउट नहीं हुआ कि लोग सब्सक्रिप्शन इंडिया के खरीदेंगे? लाइक आपको कभी भी डाउट था प्रोडक्ट पे? और अंकिता, मैं उससे पहले बोलना चाहता हूँ, दारू पीते पीते भी $1 बिलियन इंडस्ट्री कर सकते हैं. हाँ. Yeah, वो तो सरप्राइजिंग था हमें भी. प्लस आई थिंक अबाउट द मार्केट डेप्थ ना, ये हुआ कि आई थिंक एक रिपोर्ट पढ़े थे कि द एंटायर सब्सक्रिप्शन मार्केट इन इंडिया और द OTT मार्केट इन इंडिया इज ग्रोइंग एट 50% ईयर ऑन ईयर. एंड बोल रहे थे कि 100 million users were using an OTT subscription last year. In 2020 it was 150, and so if it goes at the same rate, 225 ऐसा बढ़ता जाएगा, right? And that was where we were like, even if all these users purchase 2-3 subscriptions, and we are able to enable them to purchase these subscriptions, it's easily like a multi-million-dollar company. So that was where वो report पढ़ने के बाद काफी confidence आया, and I think this was like a report by Bain or somebody. And तो एक बात बताओ इसमें आप कि आपका सब्सक्रिप्शन तो मतलब सब्सक्रिप्शन अपन ने 4-5 कंपनीज का ले लिया. हाँ. तो उसको छोड़ने मतलब उसको आपके प्लेटफॉर्म में हमने डाल दिया. तो अभी आपके प्लेटफॉर्म को याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपका भी तो सब्सक्रिप्शन ले रखा हमने. हमारा प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन, हाँ, आपका भी तो चार्जेस होगा ना? हाँ, नहीं, हमारा आप फ्री फॉर ऑल है. फ्री फॉर ऑल है. या दैट्स द कंप्लीटली फ्री है. नहीं, ये मर्चेंट से लेते हैं. सो हम ब्रांड से लेते हैं. सो इंस्टेड, सो हमने क्या नोटिस किया कि ब्रांड्स को अभी स्पेशली सब्सक्रिप्शन ये कैटेगरी में ना काफी कैक है. सो आई थिंक हॉटस्टार को कुछ 700-800 रुपीज कैक है. सिमिलर फॉर सोनी लाइव ऑल्सो. तो हमने क्या किया, हमारा प्लेटफॉर्म का कैक रिड्यूस कर लिया. आवर प्लेटफॉर्म कैक इज लाइक 25-30 रुपीज. सो हमने ये पिच किया कि इफ यू गो एल्सवेयर यू विल गेट अ यूजर फॉर 750-800 bucks. हमारे पास आओ और यू कैन गेट एन इंक्रीमेंटल यूजर फॉर 25-30 bucks. So and then we started charging the commission on the brand side because I actually previously worked at Swiggy. एंड वहाँ मैंने ये नोटिस किया कि इंडिया में यूजर्स को फ्री ऐप चाहिए. फ्री चीज, हाँ, सब कुछ फ्री जनरली.
प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वैसा लाइक एटलीस्ट इनिशियल डेज में डेफिनेटली नहीं चलेगा, राइट बिकॉज अंटिल यू हैव अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, लेट्स से 2 million यूजर्स, 3 million यूजर्स, एंड ये 2 million में लेट्स से 50% आर कमिंग month on month, that is when maybe you can think about charging. नहीं तो यूजर साइड चार्जिंग काफ़ी रिस्की है इंडिया में, स्पेशली कंज्यूमर टेक में. सो गिवन वो स्विगी का एक्सपीरियंस देख के मुझे ये लगा कि definitely free for all होना चाहिए, at least for the first 5 years of our sort of journey. And yeah, like that was where we decided आप कि पैसा जो कमा रहे हो ब्रांड से कमा रहे हो, Brand ब्रांड से. में भी सब्सक्रिप्शन तो 10-15 ब्रांड ही देते हैं, 15-20 ब्रांड ही देते हैं अगर देखा जाए तो. नहीं, एक्चुअली लाइक हमारे पास 200 ब्रांड्स है अभी, सब लोग कमीशन देते हैं. सब लोग कमीशन दे रहे हैं आपको. तो we were also surprised कि when we noticed some of these brands giving us, लेकिन हाँ मार्केट डेप्थ काफी ज्यादा है. बिकॉज So, उनको कस्टमर एक्विजिशन नहीं करना पड़ रहा, बिकॉज आप Exactly. कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हो और कस्टमर हाँ. एक्विजिशन करके अपने प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो, and then exactly. वो खुद ही आके कुछ भी कोई भी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकता है. प्रॉपर. सो मान लो एक इरोस नाउ है, राइट कोई नहीं सर्च करता है ना कि मुझे इरोस नाउ चाहिए. लाइक यूजली जाते हैं कोई मार्केट प्लेस पे, देखते हैं हमारे मार्केट प्लेस पे, देन दे रियलाइज वो हॉटस्टार इज देयर, ये इज देयर, देन दे थिंक कि हाँ इरोस नाउ भी खरीद लेता हूँ. बट वैसा डिस्कवरी. इनिशियल डेज में तो आपके पास ना तो कंज्यूमर था ना ब्रांड ना था, तो brand था. वो जो जर्नी थी, हाँ अगर उसको हाईलाइट करोगे तो आई गेस. हाँ, तो टू बी ऑनेस्ट लाइक इवन लास्ट ईयर एंड ना, फॉर एग्जांपल वी रीच्ड आउट टू काफी ज्यादा बड़े ब्रांड्स लाइक हॉटस्टार, लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम कैसे वीडियो. पहुंचे वहां तक? आपकी कोई पहुंच थी क्या ऑलरेडी? हाँ, तो इनिशियल डेज वाज हार्ड डेफिनेटली. फर्स्ट 3-4 months ऑफ ब्रांड कॉल्स ऑलमोस्ट एवरीवन यूज्ड टू रिजेक्ट अस, क्योंकि इधर बोलते थे कि नहीं इसमें इतना स्कोप नहीं है, या बिकॉज वी आर द फर्स्ट प्लेयर इन दिस मार्केट, राइट. तो दैट वे दे विल डेफिनेटली आर लिटिल मोर स्केप्टिकल कि कैसा चलेगा, किसको मतलब बेनिफिट आएगा. दैट वाई एज वी गॉट मोर एंड मोर यूजर्स, एंड आई थिंक all credit to the users who are using our app, because I think we touched 100,000 users around New Year's. 100,000 users. हाँ, Great. तो around that time we started to get a lot of momentum, and January February of this year काफी I think 3-4 बड़े brand close हो गए. Sony Live was a big one, Eros now was a big one, etc. ये especially ये OTT market या music या publications market में ना, it's all FOMO का game. तो लाइक एक प्लेयर है तो आप भी आ जाओ. नहीं तो आपको बिजनेस का आइडिया कैसा है? मतलब आप बिजनेस करना चाहते थे या फिर मतलब हाँ सिर्फ दारू पीते पीते तो नहीं आया हुआ? हाँ, एक्चुअली मैं ऑलवेज ये सोच रहा था कि लाइक 30 के बाद करूँगा कुछ, 30 के बाद वैसा सोचता था. बट आई थिंक वंस दिस पेन पॉइंट हैपन कि ये फुटबॉल मैगजीन ने 6,000 बिल कर लिया, एंड देन आई सॉ कि कोई नहीं है जो सही से कर रहा है, देन आई वाज लाइक हाँ लेट्स जस्ट बिल्ड इट फॉर आवरसेल्व्स. इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि हाँ एक साइड प्रोजेक्ट के तरह स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद ये एग्रीटेक स्टार्टअप कॉल्ड निंजा कार्ट. तो आई यूज्ड टू वर्क विद द CFO वेरी क्लोजली देयर, एंड आई वाज थिंकिंग कि साइड प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं एक्सेट्रा. बट इन 2 weeks ऑफ स्टार्टिंग वी गॉट हिट बाय अ बंच ऑफ फंड्स एक्सेट्रा सेइंग ये वैल्यू प्रोपोजिशन काफ़ी सही लगा, तो क्या आप कुछ रेज करना चाह रहे हो या जो भी. एंड देन took a really hard call like in saying हाँ निंजा कार्ट को छोड़ देते हैं, शुरू ही कर लेते हैं, क्योंकि स्कोप काफ़ी लग रहा था. एंड वन थिंग विच गेव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस वाज आल्सो दैट पहला प्लेयर है तो कुछ ना कुछ बन जाएगा टाइप. सो दैट वाज द ब्रॉडर दिस थिंग. बट या ऑलवेज प्लान था कि थोड़े देर बाद लाइक विल स्टार्ट अ बिजनेस. लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक ऑफ 30 एज अ बेंचमार्क. 30 के बाद करूँगा, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि 30 सेफ या जो भी है. तो I was under that illusion, but then I was like this felt too close to heart, plus काफी सही वाइब्स आ रहे थे, तो I thought like why not. Over to you. तो आपने स्विगी और निंजा कार्ट में काम किया, तो आपने वहाँ से क्या क्या सीखा और फ्लीक में क्या अप्लाई किया, और व्हाट वाज योर रेजिग्नेशन जर्नी आल्सो, जब आपने अपना आइडिया शेयर किया होगा, मतलब रिजाइन करने से पहले बताते हो कहाँ जा रहे हो. तो कैन यू शेयर दैट जर्नी? Yeah, so when I resigned from Ninja Card, I did not tell anybody. Even my parents, I think I told after one and a half months of launching, when I knew that तो पहला राउंड रेज किया था वो 1 million का था, and that was pre-product. Okay. सिर्फ आइडिया पे एंड फाउंडर पे ट्रस्ट करके दे रहे थे. So I thought हाँ अराउंड द टाइम दैट ये क्लोज हो रहा है मैं मम्मी डैडी को बता दूंगा टाइप्स. अच्छा. So I basically told them around June starting when
we were just starting to sort of close the round and that sort of a thing. Ninja Cart में तो किसी को पता ही नहीं था, so I was just like हाँ मैं घर जा रहा हूँ, pandemic हो रहा है type. But हाँ Swiggy से I think one of the best experiences of my life was with Swiggy. So I worked very closely with वहाँ दोनों co-founders और काफ़ी सारे leadership team से भी. And I worked there from 2016 to 18, and that was my first job ever. So all these guys who were there in the leadership team then were like late 20s. So they always used to see कि हाँ ये smart लोंडा है, like इसको सिखाते हैं type. So that soft corner was always there for them. And the 2 years I was there, I learned a lot basically, and I went with that mindset, and I easily have like some 6-7 mentors over there whom I just fall back to for any doubt. So the other day I was finding it hard to sort of navigate one product decision. So I just dropped a ping to the Swiggy ka ek co-founder, and he replied back in like half an hour. So that way I think the age at which I went there, which was like I went there at 21. So that also helped a lot, क्योंकि one I was very curious and I was like हाँ मुझे सीखना है. And they were also in the phase of like sort of we'll make this guy learn and etc. So I think Swiggy experience helped a lot in sort of the whole journey, not just from a mentor perspective but even from a thinking perspective, etc. So and I also launched the Swiggy Spooper product there, the subscription program. So that helped a lot in sort of execution prioritization, right? क्योंकि idea तो आता है कई बार like, but you have to know what to prioritize when. So that was something which launching Swiggy Super helped me a lot. सबसे challenging part क्या लगता है entrepreneurship में? Handling people. Easy. Managing people is easy. तो आपको थोड़ी मैनेज करना है, आप तो लीडरशिप टीम को मैनेज कर दोगे ना? हाँ लेकिन पहले तो लीडरशिप टीम नहीं थी. So and I am not a pure techie. I would consider myself more of a product or a design person. So I remember कि पहला 6 developers I think they are still pissed with me because I used to set unrealistic timelines, unrealistic targets in the first 3 months, and once the CTO came in तो उन लोग का life थोड़ा आसान हो गया. But that is something I think which you start to learn over time as well. I was just 26 when I started, so like even I was taking a leap of faith in starting this, but I think easily managing people and keeping them sort of motivated while at the same time keeping them happy is easily the hardest. So अभी कितना टाइम हो गया आपको करते हुए entrepreneurship? 1.5 years हो गया. कैसा लग रहा है आपको? काफी सही लग रहा है. सही लग रहा है या फिर टेंशन है आपको इन्वेस्टर्स की? थोड़ा टेंशन होता है कभी-कभी, बट लाइक इवन इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स एक्चुअली. कभी-कभी एम्प्लॉइज से ही टेंशन होता है कि हाँ इसने कुछ कर दिया, लाइक ऐसा टाइप्स. बट लाइक इट्स फाइन. आई थिंक इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. धोनी जैसा धोनी बोलता है ना, तो सो दैट वे आई फील इट्स बीन अ लॉट ऑफ फन एंड लाइक. तो आपकी रेजिग्नेशन की जर्नी नहीं बताई आपने, जो स्विगी में आप छोड़ के आपने ये स्टार्ट किया? स्विगी एक्चुअली मैं स्विगी खत्म करके तभी मैं आई वेंट फॉर एन MBA. सो देन आई केम बैक टू निंजा कार्ट. दैट्स व्हेन आई रिजाइन्ड एंड स्टार्टेड फ्लीक. ओके. तो स्विगी में व्हेन आई वाज रिजाइनिंग आई वाज इन द मिडल ऑफ लॉन्चिंग सुपर. वहाँ मैंने कैट लिखा था कि हाँ मुझे काम नहीं करना है अब इसके बाद टाइप. सो देन आई गॉट आई थिंक कैलकटा और बैंगलोर से एडमिट्स. मैंने सोचा कि बैंगलोर में ही चले जाता हूँ क्योंकि मेरा घर था बोमनहल्ली में और कैंपस है IIM बैंगलोर है, लाइक इट्स लाइक जस्ट बैक गेट ऑफ द सोसाइटी. तो आई वाज थिंकिंग कि हाँ बैंगलोर चले जाता हूँ मैं. बट देन ये फाउंडिंग टीम जो स्विगी में थी दे वर ऑल फ्रॉम कैलकटा. तो उन लोग ने ये आइडिया डाल दिया कि बैंगलोर मत जाओ, कैलकटा जाओ. तो 2 साल वहाँ था, काफ़ी सही टाइम था. बट came back, worked with startup again, which is Ninja Cart. Ninja Cart में तो I honestly didn't tell anyone because I actually felt the idea very strongly that मुझे ये करना है. But I knew that if I told some of the, let's say even my manager or even some of my parents at home, they might be a little negative about it. So I was initially under the impression कि मैं करूँगा कुछ, I will get it started, and then once there's enough traction, I'll tell them type. तो आपने देखो अभी आपने आइडिया आया, आपने रिजाइन किया, बट आपने जो इनिशियल जर्नी की कि इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, लोग भी चाहिए, तो वो आप अपनी जर्नी बताओ कि आपके कितने इन्वेस्टर्स आए, कैसे आए, और स्टेप बाय स्टेप प्लीज. एक्चुअली वो मैं
at that time ना वो US वाला शार्क टैंक देखता था. Okay. And एक्चुअली मुझे एक पिंग आया लिंक्डइन पे कि एक रशियन इन्वेस्टर से बोल के कि हे वी लाइक द आइडिया, एक कॉल पे आओगे क्या. कॉल पे गए एंड मंडे आफ्टरनून था ये. सो पहला कॉल हुआ, देन दे सेड वी विल टेक 2-3 weeks टू एवेल्युएट. देन ये कॉल हुआ 1 o'clock एंड मैंने कॉल खत्म करके चल गया था फॉर लंच 2 o'clock. देन 2:40 ही पिंग्स अगेन सेइंग 3 o'clock एक और कॉल करोगे क्या. देन आई वाज लाइक you said 2-3 weeks, ये क्या चल रहा है. But still we went for the 3 o'clock call, me and my co-founder, and then he said he listened to us for like some half an hour. बीच में he stopped us and he's like, I'll give you some money, do you want to take it or no? Wait, is this happening for real? मतलब I thought कि थोड़ा और formal होगा process and all that. First question was, is this how it happens usually? तो उसने बोला कि depends, if we like the idea we move quick, वैसा ऐसा कुछ बोला. Then we thought for I think 2 minutes and then we were like, yeah, let's go for it. After that, yeah, like there were a couple of other investors who had also reached out to us. तो कितना रेस किया था आपने फर्स्ट फंडिंग में? First में we raised a little more than $1 million. And okay. Yeah, we had like 5 investors total. And ये Russian investors और 4 और Indian investors itself. So I reached out to this one college friend of mine from IIT who was also in startup. तो उसने पहले funding raise किया था. तो I was like, dude, I raised some money, but I'm not able to. So funding round में ऐसा होता है कि you raise some money and then you have to close it. Basically saying, हाँ, this is done. So I was finding it hard to close. क्योंकि I was getting some traction, लेकिन closing मुझे काफ़ी, because even I was new to it. So he introduced me to his one old investor and we spoke over like almost 3-4 weeks and then we got to sort of close it. So I think we started conversations in April, May mid तक close हुआ, June तक, July तक we started sort of the work etc. And we didn't have a company then. तो incorporated कुछ नहीं था. तो they were like हम टर्म शीट इशू कर सकते हैं लेकिन किस कंपनी के नाम पे इशू करें. देन वी वर लाइक, ओके, गिव अस अ वीक, वी विल सेट अप अ कंपनी. सो yeah, that was how it happened. It was actually very quick. So it was a luck. It was a luck. I don't know, I think a mixture of both. I think you should be very clear with expressing yourself, right? Especially when you're a founder, na? Like you should be very capable of speaking out your mind types. If that is sorted, I think yeah, everything falls into place. I think that's what happened there. Plus, to be honest, I think 2021 was the best time to be a founder. तो क्या रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपने तो ये फंडिंग रेज किया, आप कितना पैसा कमाओगे इससे? इससे अभी तो उतना नहीं कमाएंगे बिकॉज ये तो कंज्यूमर लाइक. सो माय दिस थिंग इज दैट यू ईदर गो फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस और यू गो फॉर ग्रोथ. क्या लगता है, सस्टेनेबिलिटी मैटर करती है, ग्रोथ मैटर करती है? अभी तो ग्रोथ ही. सो एटलीस्ट द फर्स्ट 2-3 years ऑफ अ कंज्यूमर टेक बिजनेस इन इंडिया यू शुड नॉट गो फॉर सस्टेनेबिलिटी. कितने कंज्यूमर है जिनके पास मतलब सब्सक्रिप्शन है इंडिया में? 450 million. 450 मिलियन है जिनने सब्सक्रिप्शन ले रखे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म के, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के. बट उन्होंने ले रखे, तो आप ये चाह रहे हो कि वो 450 मिलियन कुछ और भी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. That is your calculation. Yeah, not just that, but even if let's say 450 में we are able to scratch worst case like 10% of market base. 10% तो बहुत ज्यादा हो जाता है मार्केट से. लेकिन फर्स्ट प्लेयर है ना, तो वो कॉन्फिडेंस है. मान लो आपसे कोई अच्छा प्लेयर आ गया और उसके पास बहुत अच्छी फंडिंग है और उसने बहुत ऑलरेडी है ना, फ्लिपकार्ट, Amazon ये भी आ रहे हैं. बट लाइक व्हाट आई नोटिस्ड इज आई थिंक इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स काफी है ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन स्पेस में, बिकॉज Amazon is there. So for example, Amazon Prime, there are that 12 channel things, etc. Tata Play उन्होंने भी किया, वो भी कर देंगे साथ साथ में. then exactly for them उसको उतना फर्क भी नहीं पड़ता है. राइट, बेजोस वहाँ बैठेगा और ये बोलेगा कि हाँ 2-3 बिलियन एक्स्ट्रा डाल दो सब्सक्रिप्शन के लिए. तो that way I think there's always a threat of competition, especially in India, because especially over the pandemic ना काफी लोग को ये रियलाइज हो गया कि इंडिया काफी सही मार्केट है. एक चीज थोड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन है कि जब सब लोग जानते हैं कि भैया कि अच्छा फंडिंग मिली, आपकी इक्विटी बेच के आप पैसा करोड़पति बन जाते हो, राइट, बट मान लो कंपनी नहीं चलती है, तो क्या जवाब देना पड़ता है इन्वेस्टर को? तब कैसे फेस करते हैं? यूजुअली कुछ उतना लोड नहीं होता है. ये तो ग्रेट है. चलो पैसा उठाते हैं. एग्जैक्टली. सो इन सेंस लाइक मेरा ये है कि लाइक यूजुअली एटलीस्ट इफ यू आर डूइंग लाइक अ वीसी फंड रेज ना,
unless it's on like a depth types thing, yeah, उतना load नहीं है. So हमको मिला दो सर एक बार. so that is the attitude I always had. Plus I was always of the opinion that पहला 3-4 years at least, I am not going after sustainability. So I told in the first conversation itself, don't expect profits in the first year. I'm chasing growth. So we want to make it as big as we can. Then we'll start chasing growth. Right. And for example, अभी जो भी IPO हुए ना, टेक स्टॉक्स, जोमैटो या पॉलिसी बाजार, पर बेचारे इन्वेस्टर का तो ठीक कुछ नहीं, पर आदमी का पैसा डूब जाता है उसमें. हाँ वो तो है. ये तो सब सुन ही रहे हैं आजकल. लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा पोस्ट यही आती है, पेटीएम का स्टॉक खरीदा और आम आदमी ने पैसा खरीदा उसका डूब गया. Yeah, so I think it's also कि market mature हो रहा है slowly, because तो US में देखोगे तो पहला tech startup IPO किया था 1980s में, and so they have like a 40-year sort of span over which tech startups have been IPOing. Right. India में वो 1980s का moment 2021 में आया. तो I think slowly things are transforming, but yeah, like I think it's a long-term game for sure. Right, absolutely. Of course, आपको जैसे आप बता रहे थे ब्यूटीफुल स्टोरी, लाइक अ फेरी टेल दिख रही है कि आपको इन्वेस्टर मिला, स्टार्ट हो गया है, बट आपने बहुत सारे रिजेक्शन भी फेस किए होंगे. तो आपके स्टार्टअप के लिए कौन से रिजेक्शन वाले टॉपिक्स थे जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने ना बोला? From an idea point. Yes, idea point. हाँ, आई थिंक हम पहले ये बोल रहे थे कि वी विल फोकस और वी विल बिकम अ ग्लोबल कंपनी, लाइक इंडिया यूएस सब करेंगे. इनिशियली हम भी काफी एम्बिशियस थे. वो पहला अभी हो कि नहीं तो लाइक आई थिंक वी एक्चुअली फेस्ड अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस इनिशियली. हमने 5 इन्वेस्टर क्लोज किया, बट इन दैट राउंड आई वुड हैव स्पोकन टू, मेरे पास एक्चुअली एक गूगल शीट्स है इन विच देयर इज लाइक सम 100 इन्वेस्टर्स का नेम, एंड of them I would have spoken to at least 70-80 in the span of 2 months. So the rest of them basically have rejected or they were late to the party type. हमने already close कर लिया, उसके बाद आया. But broadly I would have gotten positive responses till the end from probably 10-15 investors. The rest of them all were like, hey, you're either too early, आपके पास product ही नहीं है तो क्यों करेंगे, आप first time founder हो, आप सिर्फ 26 हो. So that way there's a lot of rejection, but then I think it's about how you take those rejections and still go forward with the whole process. तो हमने पूरा इंटरनेट खोद लिया, बट आपके होने ज्यादा जानकारी हमें मिली नहीं. तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा एक्टिव नहीं हो अपने प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है? तो इनिशियल डाउनलोड्स कैसे किए? जैसे एक बंदा अपने प्रोडक्ट को अपने साथ लेके चलता है, तो इनिशियल डाउनलोड्स की अपनी जर्नी बताएंगे कि हाउ यू स्टार्टेड. I think in any business, if it's consumer facing, the first thing you do is hit up all your friends or hit up all your फॉलोअर्स. इंस्टाग्राम में मेरा आई थिंक 800-900 फॉलोअर्स थे, सबको पिंग कर दिया था. कॉलेज भी आई जस्ट पास्ड आउट ऑफ कॉलेज आल्सो देन, राइट, IIM वाला 2020 में. तो आई ड्रॉप्ड अ पोस्ट, देन हूएवर रिप्लाइड आई वाज लाइक डाउनलोड. सो आई थिंक वहीं से 200 या 300 डाउनलोड्स आ गए, एंड आफ्टर दैट इट वाज जस्ट अबाउट डूइंग सम SEO ऑप्टिमाइजेशन वैसा. एंड हमने एक वेट लिस्ट भी लॉन्च किया था. ये OnePlus का वेट लिस्ट होता है ना, काफी फोमो जनरेट करता है. So we tried a couple of gimmicks like that. So we thought, anyway, like roughly 400-500 downloads है friend circle से. So now we will also start this waitlist जैसा game. So वो होने के बाद there was a lot more traction as well. I think in 2 months since we started a waitlist, we got some 10,000 users. So that helped a lot. So India में FOMO का game काफी सही है. तो आपके अभी कितने users हैं? 750,000. 750,000, that's actually a lot. तो अभी आपने ये देखो, अब तो मैं IIM से नहीं हूँ, मेरे को लगता नहीं अभी. मैं भी IIM से नहीं, हम नहीं IIM से, ठीक है? कोई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताना चाहते हो कि व्हाट मेक्स एन IIM और IIT so special? I don't know if it's too much from this perspective, but like the network helps a lot. I think the network is easily the best part of it, and if anybody is saying anything else, I don't think they understand the game, because network is easily the best, क्योंकि I'm able to ping a bunch of friends saying from my network who have gone through similar experiences, either from the past or some time ago types, which is I think the biggest advantage. I mean, apart from that, पढ़ाई तो मैंने उतना किया नहीं था वहाँ, तो I honestly don't think I relate to that part of it, but I was very socially active even in my campus. So IIT में I was the cultural affairs secretary. So we stood for elections, got voted. So that way I had a lot of social activity going on in campus as well. Even in IIM,
I didn't stand for any elections, etc. But we used to be active across the campus. So that way, I think the network is the biggest sort of. आज से अपन भी एक मिशन पे चलते हैं, हाँ नेटवर्क बनाने की। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि आजकल जो हायरिंग है वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नहीं हो रही, बहुत ज्यादा लोग इस तरह से हायर करे कि बच्चे के पास स्किल है यार, मतलब आई डोंट केयर इफ यू आर ग्रेजुएट। तो आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो? आर यू गोना जज अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द टैग दे ब्रिंग, or are you going to judge a person on the skills even though they are not graduate? I have actually slightly different view there, in the sense I think tags are great to attract talent. So I can say that, hey, I am from an IIT IIM, and get people to think about it more. But when I'm selecting a person, it's always based on skill and attitude, because I think those are the two clear indicators. Na? Skill hai, yeah. If you're even medium skill, do you have the attitude to learn? So there have been a lot of times where we found people ki IIT से है, काफ़ी सही skill है, लेकिन attitude काफ़ी गंदा है. So that used to be a major turn off for us. So I think attitude is one of the major sort of filters for us, saying if you have a bad attitude, even if you have a great skill and the right tag, you're not in. And yeah, so that way I think that is one major call we've taken as leadership group as well. But yeah, broadly skill matters, but only up till the point where your attitude is good too. So that's something I'm very clear about. So अभी आपने बोला 8 लीडरशिप टीम में रहोगे, को-फाउंडर है सब या फिर आप 2 ही को-फाउंडर हो? नहीं, सिर्फ मैं और मेरा को-फाउंडर एक और लोंडा है, and the rest of them all have function heads, partnership, CTO, marketing head, ops head, वैसा. तो मुझे ये जानना था कि आपको बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल से इनविटेशन आता है फॉर सेशन, तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं स्टूडेंट ही होंगे फॉर श्योर, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. इफ यू फील स्ट्रांगली अबाउट एन आइडिया, और इफ यू फील very passionate about something, just go for it. Cut the noise and just go for it, because plus I feel 20s is for mistakes, so it's fine. Like matlab chalega to chalega. If it does not work also, there are more opportunities which will come your way because of the fact that you openly failed or whatnot. So yeah, I think that would be the biggest thing, ki follow your passion, and 20s is for mistakes. आजकल बहुत प्रेशर है, मेरे पे भी बहुत प्रेशर था कि भाई बेटा एमबीए कर ले. वो क्वेश्चन सब पूछते हैं कि बेटा तू एमबीए क्यों नहीं की, और एमबीए के साथ अभी भी चाय वाला क्यों नहीं बने? हाँ, तो वो खुद एमबीए नहीं किया है, बाय द वे. वो चाय वाला उसने उसका नाम है, वो खुद एमबीए चाय वाला, उसने खुद एमबीए नहीं की. बट आपको लगता है कि किसी को एमबीए करनी चाहिए? If it's not from IIM also, मैं IIM के स्टैंडर्ड से बात नहीं कर रही. I don't know, to be honest. Like not I don't know, but I don't think you need to just because ये tag के लिए, because that doesn't really help anyone. Obviously, having a tag is great. I'm not saying that it is not beneficial to have it, क्योंकि ये tag से काफी ज़्यादा doors खुल जाते हैं, networks खुल जाते हैं, etc. Very clear about where you want to be. I think you should just go for it. So, for example, I know the Dukaan ka founder, right? So he's not from an IIT or an IIM, but I feel he's one of the smartest folks I've actually ever met from a general point of view. And whenever I'm around him, I'm like, damn, like this is super cool type. मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं हिंदी में है कि भैया कि जो करना है कर लो, कोई टेंशन मत लो किसी चीज की. तब तो जब तक क्लैरिटी है, right. So I think you should just go for it. Absolutely. So right. Because if you're not having clarity, some self doubt is. वो वक्त के साथ आती है ना, आपको एक दिन में नहीं आती है. Definitely. टाइम के साथ कोई भी काम करते करते कुछ करते करते ही आती है. Proper. Since like I think the other day मैंने LinkedIn scroll कर रहा था, and I saw that one 15-year-old had raised some funding for a startup, and I'm like obviously if you're having clarity at 15 itself, it's good for you, but obviously for some people it takes longer to. But उसे डिप्रेशन में नहीं आ सकते कि कोई 15 साल का लड़का करोड़पति बन गया तो क्या मैं नहीं बना, ऐसा मतलब मेरे ख्याल से कंपैरिजन पार्ट नहीं होना चाहिए. उन्होंने अभी तो फोमो के बारे में इतना कुछ बोला. इंडिया में फोमो बहुत चलता है, तो इंडिया में काफी चलता है फोमो. प्लस आई थिंक वो कंपैरिजन काफी पसंद है ना, स्पेशली इंडियंस को, और इंडियन पेरेंट्स को तो और भी ज्यादा ही है. उन्हीं की वजह से शार्क टैंक चल रहा था मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा. Yeah, so that way I think internally we should not compare ourselves to anybody, because everybody is on their own journey. You don't know what background or what sort of experiences each one has had types. So yeah, matlab
use other external factors as motivation maybe, but definitely not, don't beat yourself around it कि अरे ये 15-year-old ने ये कर दिया, मैं 26 होके भी यही कर रहा हूँ टाइप. Like that's not the right way to think about it broadly. Entrepreneurship doesn't have any age. कुछ भी मैंने नहीं तो है. बहुत देखे हैं जो 50 like Jhaji pickles. कुछ भी Those नहीं है, aunties, have you seen Shark Tank? Jhaji pickles. No, like I've seen a lot of them. Yeah, so they are 50 plus and they are running a successful pickle business. Wait, this is the Bahu and like the yes, that I'm always consume their product. So, what is your 5-year plan? I think at the end of 5 years, I want a 6-month break. क्योंकि काफी फटी रहते हैं कभी-कभी, to be honest. But like, yeah, I think the last 1 year has been easily the best experience of my whole life in the sense. One, because I've been doing what I love, and I know that I choose to do what I love. That's another thing which is helping that journey as well. And in general, my recruitment strategy has always been to work around people you're very comfortable with. So a lot of my abhi leadership group lo ya office में generally लोग भी लो, it's a lot of first network folks itself. I think 3 of my wingmates from IIT are working with me in the company. So वो काफी, I think it's a nice environment to work at as well. So that is something I actively look कि हाँ office में, office shouldn't feel like office, right? Like it should feel like a हाँ you're coming and having fun, but at the same time building something too. तो इसी के साथ मैं फिर हसल कल्चर को भी टच करना चाहती हूँ क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत ट्रेंडिंग है ये टॉपिक, हसल कल्चर. हाँ मैंने एक What post is your देखा comment था. on that? I mean, I don't agree with that LinkedIn post. Yeah. वो like I was like very out of words कि क्या चल रहा है. But yeah, for example, we don't have a strict start or an end deadline. We don't tell people कि you should come at 10 or 9 or 8 or anything. Some people come at 12, some people come at 2. But they know what they're supposed to do and they deliver it. So that's what we keep them accountable for. Specifically wanted to set that culture also कि 9 to 5 nahi hai ya 10 to 8 nahi hai. Like that's just useless, right? So I mean, either you're interested and you're contributing at your own pace, or you're not interested and you can work elsewhere. So that's the broader theme. Startups are mostly shamed for hustle culture, but you are breaking the norms. Thanks for that. तो थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं. अच्छा. जल्दी जल्दी आंसर देना है, ज्यादा नहीं सोचना. First place to hang out, favorite place to hang out in Bangalore? Bob's Bar. Cheap chicken. IIT or IIM? IIT. Okay. Weekend or weekday? Weekday. Coder or marketing team? Which one is your favorite? Marketing आग team. लगाएंगे हम. Marketing. Techies are going to resign from Fleek, so they have more openings for software developers and marketers. iOS or Android developers. Okay. Sports or movies? Movies. Favorite sport or favorite movie? Movie. Favorite movie. Which one? Chuck the India. So favorite movie is John Wick. Okay, and I favorite like sport? mindless action. Football. Okay, India or abroad? India. Google or Infosys? Google. Swiggy or Instacart? Swiggy. Debit card or credit card? Credit card. Fleek or cred? Fleek. क्योंकि कुणाल शायद हमारे साथ नहीं आएंगे. Right. Thank you so much for your time. हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, and Likewise. of course I learned a lot from you, and we wish to spread more awareness about you क्योंकि आप social media पे ज़्यादा है नहीं. तो हम ही फैला देंगे. Yeah. All right. Yeah, thank you thank for you. watching. Talk with Abhishek, Ankita, Ankita Mehra. and good luck.